हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सुम्स किचन। और आज सुम्स किचन आपको लेके जा रही है नुपुर श्रीराम की किचन में, वेयर शी इज शेयरिंग हर लेमन केक रेसिपी विद सुम्स किचन। एंड नुपुर श्रीराम, शी इज just not only a fabulous cook, but she is a professional tarot card reader, a numerologist, a astrologist, a dancer, a singer, a multi-talented Nupur Shriram in Sum's Kitchen. Hello everyone, welcome to my kitchen. My name is Nupur Shriram and today I'm going to share a very special recipe because it is for my very special friend Suman. So I'm going to bake a lemon cake today and I will share with you all the ingredients. First thing I like to tell you that always remember while you're baking, three things are very important. First, that all your ingredients should be measured with measuring spoons and measuring cups properly. Second, all the ingredients should be at room temperature, including your dahi, makhan, whether it is chocolate, anything has to be at room temperature. And third is always preheat your oven so that it is ready for the cake to bake. Okay, so let's start with mixing the ingredients. We will start with mixing in 1.5 cup sugar. This is पिसी हुई चीनी, तो मैंने नॉर्मल शुगर को मिक्सी में पीस लिया है. Nowadays you also get this चीनी ready in the market. तो ये चीनी और ऑयल, तो ये ऑयल है मेरे पास. दिस इज 3/4 कप ऑयल. इसको मैं एक बलून विस्क से अच्छे से बीट करूंगी. आप चाहे तो एक इलेक्ट्रिक बीटर का भी यूज कर सकते हैं. See, this step is very important because you will incorporate a lot of air in the cake, and since this is an eggless cake, so it is very important that your cake is light and fluffy and well cooked from within. So it's very important that you whisk this properly. अब हम इसमें मिलाएंगे 1 कप दही. ये घर का दही है एंड मेक श्योर इट इज लिटिल थिक. तो उसके लिए आप 1 कप दही ले सकते हैं. 1 कप से थोड़ा ज्यादा, 1.5 कप दही ले सकते हैं. एंड उसको एक मसलिन क्लॉथ में हैंग कर दीजिए फ्रिज में करीब 5-6 घंटे के लिए. तो उसका जो पानी है सारा निकल जाएगा एंड यू विल हैव अ वेरी गुड थिक दही फॉर योर केक. So let's mix the dahi properly. See, this is how it will look. The oil that I've used here is rice bran oil because it is a neutral flavored oil. You can use sunflower oil also, but try and use any oil which does not have any flavor. It should be a neutral tasting oil. ओके, सो दही भी हो गई है इसमें. अब हम इसमें डालेंगे 5 tablespoons freshly squeezed lemon juice. एंड 1 नींबू का पिसा हुआ ग्रेट किया हुआ स्किन. सो दिस इज बेसिकली zest of 1 lemon. This is a lemon cake, so it should have a lot of lemony fragrance. I have not added any vanilla extract to this, but if you want, you can also add ½ teaspoon vanilla extract. अब हमारी बारी है कि हम इसमें मिलाएं अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स. सो ये मेरे पास मैदा है. इसमें मैंने डाला 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर एंड ½ टीस्पून बेकिंग सोडा. इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ ताकि ये जो राइजिंग एजेंट्स हैं ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए. ओके, और अब हम इसको बीट नहीं करेंगे. अब हम इसको कट एंड फोल्ड टेक्निक से सिर्फ मिक्स इन करेंगे और थोड़ा थोड़ा लेंगे ताकि मिक्सिंग इजीली हो जाए.
So I'll just mix it in. See, this is how you just turn it, as in fold it in and just incorporate the maida into the liquid batter. अब ये बाकी जो बचा है ये भी मिला देते हैं। तो हमारा बैटर रेडी है। सी दिस इज द कंसिस्टेंसी ऑफ द बैटर। अगर आपको लगता है कि आपका बैटर थोड़ा सा ड्राई है या थोड़ा सा थिक है तो आप उसमें थोड़ा सा दूध मिला सकते हैं विच शुड बी एट रूम टेम्परेचर। तो मेरे पास ये लोफ टिन है, इसमें मैं केक बेक करूंगी। सो आई जस्ट कोट इट विथ ऑयल। इसमें एक नॉन स्टिक कोटिंग लगाएंगे। आप चाहे तो बेकिंग पार्चमेंट पेपर आता है उससे भी लाइन कर सकते हैं। मैंने इसमें ऑयल कोट किया है। माई ओवन इज रेडी, सो आई जस्ट पोर द बैटर। मैंने इसमें हाफ बैटर ही डाला है, हाफ मैं नेक्स्ट बैच में बेक करूंगी। लेट्स टैप इट ताकि जितने एयर बबल्स हैं वो निकल जाए। सो the cake is now ready to go inside the oven. Okay, so let's see the cake here. It's ready. Now can you see these cracks over here? Now these cracks are here because I cut the cake when it was absolutely hot. So this is a very important tip that do not try to cut the cake when it is just out of the oven. Let it sit, let it relax, completely cool down for at least 2 hours and then only cut the cake. Okay, so I'll just show you the sideways. Can you see the crust over here? It's not really a crust but it's a brown cover. बहुत अच्छा है। और I'll show you how it looks. So when you cut it, okay, I think this is a better, yeah. So it is nicely cooked and extremely moist and soft. So this lemon cake is basically a very delicate cake and it's absolutely tangy. It's very tasty. Okay, so I'll also share with you 2 tips wherein you can also serve your cake with a topping. So a very good topping which goes with the lemon cake is a cream cheese topping. So the ingredients for cream cheese topping will be 1 cup of cream cheese. You can use any cream cheese. Philadelphia is a very good brand of cream cheese. So take 1 cup of cream cheese. You take half cup of softened butter. So you can very well use Amul butter or any homemade butter. And you should also put in 1 cup of icing sugar. Mix all these 3 ingredients absolutely soft and fluffy with an electric beater. You can add in 1 teaspoon of vanilla extract and 1 teaspoon of lemon rind. Okay, so that will also add an extra flavor to the topping. Beat it well, make it extremely light and fluffy, and then put it on top of the cake. Spread it on top of the cake only when the cake is absolutely cold. तो 2 घंटे रेस्ट करने दीजिए केक को। उसके बाद ये टॉपिंग बनाइए, उसके ऊपर स्प्रेड कीजिए, कट इट एंड एंजॉय द केक। सेकेंड टॉपिंग विल बी वेरी सिंपल। जस्ट टेक चाय का छन्नी, उसमें यू कैन पुट 2-3 स्पून्स ऑफ आइसिंग शुगर एंड जस्ट डस्ट इट ऑन द केक। सो दैट ऑल्सो लुक्स वेरी नाइस। So this is my recipe of this tangy, lemony and moisty lemon cake. I hope you enjoy this and keep watching Sum's Kitchen. Thank you, Nupur. Thank you for sharing your lemon cake recipe with Sum's Kitchen. It really looks very tempting and moist. I'm definitely going to try this and hope in future you are going to share some more recipes with Sum's Kitchen.
and as she also has her own channel, so I am sharing the details of her channel in my description box. Please go through that, and don't forget to like, share and subscribe Sum's Kitchen. See you soon.